Thank you so much, sir. I think it is written already. You have given the welcome speech and enrollment journey. आपने मेरा काम आसान कर दिया. Okay, let me give you a little brief. Uh, Manovikas is working since 1997, so almost we have achieved 25 years of services. और इस साल बहुत होते हैं. और जो मेरा अनुभव है उस अनुभव में जब भी हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप, नाउ इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, सिकंदराबाद, वहां से जब पढ़ के निकले थे तो कहते थे कि जो मेंटल रिटार्डेशन है या मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इट इज नॉट अ मेंटल इलनेस. वो पहला स्लोगन उसके हर इन्वेलप में, हर जगह. तो उस 25 साल की जर्नी में आते आते मुझे लगा कि हमारे बच्चे को मेंटल हेल्थ की सर्विसेज बहुत जरूरत है. एंड फॉर्चुनेटली वी हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू मीट डॉक्टर निमेश जी देसाई. फिर हम लोगों ने बहुत बातचीत किया इस पे, बहुत गहराई से हम लोगों ने हर बार इसी चीज को दोहराया. एंड वी हैड स्टार्टेड अंडर द मेंटरशिप ऑफ डॉक्टर निमेश जी देसाई, वी हैव स्टार्टेड दिस national seminar on mental health in 2018. So this is 6th year. In the 6th year we have talked about so many critical issues like psychosocial disability, then social inclusion, good health, counseling, so many things. And we had the great deliberation with the more and more psychiatrist friends and more clinical psychologist friend, more educated friends and everyone. तो फिर उससे हम लोगों को बात समझ में आई कि नहीं, हमारे बच्चे को भी मेंटल हेल्थ तो बहुत ही जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें डिफरेंटली प्लान करना होगा. और जो आज का ये जो सेमिनार है, जो हम लोग 3 दिन इसमें बैठेंगे, इसमें भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने बातचीत की. और जब मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो 95 में जब मैं पास आउट हुआ था, तो मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि तभी हमारे एनआईएमएच में पढ़ाने के लिए जो एक्सपर्ट आते थे ऑटिज्म को, वो यूएसए से आते थे. और हम लोगों को पता ही नहीं था कि ऑटिज्म क्या होता है, कैसे होता है. ठीक है, एक चैप्टर पढ़ लिया, किसी तरह से आ गए. फिर अब के प्रैक्टिस में लगता है कि ऑटिज्म ही नहीं, और भी अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है कि वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. और डब्ल्यूएचओ का जो है कि 10% चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड हैज द एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज. तो मुझे लग रहा है कि ये जो टॉपिक है, इट्स नॉट कि हम लोग ब्रेन साइंस को डेवलप कर रहे हैं. और मैं इस 25-26 साल 27 साल के जो प्रोफेशनल कैरियर है, उसमें मैं यही देख रहा हूँ कि जो एक बात करते हैं कि डिसेबिलिटी एडजस्टिंग लाइफ ईयर्स, हम डिसेबिलिटी के साथ एडजस्ट करता है. वो बच्चा जब जन्म लेता है तभी से वो एडजस्ट करना शुरू करता है. और एज ए प्रोफेशनल हमारा काम है कि वो एडजस्टमेंट कम कर दे, वो डिसेबिलिटी के साथ ज्यादा लाइफ ना जिए, वो एक मेन स्ट्रीम सोच के साथ जिए, एक इंक्लूसिव सोच के साथ जिए. उसको कैसे कम किया जाए? तो वो भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड 3 में से 1 बच्चे ऐसे हैं जो वो फील करते हैं कि हमें हमारा जो डिसेबिलिटी लाइफ है वो ज्यादा बड़ा हो रहा है. तो इन सब जो एक गहन पहलू है, और मैं पिछले 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो सेल्फ एडवोकेसी, हमने मनोविकास में बहुत सारे काम किए. वी हैड, जब आरटीई नहीं था तभी हमारे स्कूल से बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल में जाया करते थे. फिर देन वी फॉट फॉर द स्किल थिंग्स कि हमने एनएसक्यूएफ जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, उसमें कैसे हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी को कैसे एंट्री करवाएं. देन वी टॉक अबाउट द थिंक कॉलेज की हमारे जो खास करके जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, they should attend to the mainstream university and colleges, and they are doing it. और जो सेल्फ एडवोकेसी की बात थी, पिछले 7-8 साल से हम देख रहे थे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद अपनी बातें अच्छे प्लेटफॉर्म पे रखना शुरू किया, सिर्फ मनोविकास के लिए. एंड वी आर डूइंग वेरी बिगर रिसर्च की जो सेल्फ एडवोकेसी है, नॉट फॉर द एडल्ट्स, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द क्लास 1 और इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि वो अपनी बात जो है कि रखना शुरू करें. और जो हम लोगों ने सेल्फ एडवोकेसी को इसके साथ जोड़ा है, कहीं ना कहीं जो ये हॉट प्रोसेसिंग है हमारे देसाई सर का,
हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है वो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा एक चमत्कार करने वाला होगा कि जो सेल्फ एडवोकेसी को हम ब्रेन साइंस से जोड़ के इंक्लूसिव लिविंग को जोड़ के बहुत ही अच्छा एक आने वाले समय में होगा। और मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोग अभी तक आप अभी तक 2000 से ज्यादा वर्कशॉप्स कर चुके हैं जब से मनोविकास इंसेप्शन हुआ है। और सिर्फ एनएसएमएच का डाटा है जो हम लोग 6 बार किए 6 साल से, उसमें 7000 से ज्यादा डेलीगेट्स, सॉरी 700 से ज्यादा डेलीगेट्स आ चुके हैं। तो हम लोग सिर्फ एक यहाँ पर जो आप आए हैं, आप हमारे काउंटेड है इन द सेंस कि आपका एक एक व्यू, आपका एक एक वक्तव्य, आपकी एक एक सोच हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दैट वी डेफिनेटली वी काउंट आउट इट। और more than 100 resource persons, मैं I was counting the resource person कि हमारे सिर्फ NSMH 6 साल में 100 से ज्यादा resource person आ चुके हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास scientific papers भी है, more than 80 scientific papers we had in this NSMH kind of activity। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी उसके पार्ट हैं, आप भी इसी नंबर के हिस्से हैं। तो सिर्फ नंबर नहीं है, आप हमारे लिए एक ऐसे I can't say that participant, I can say that you are the family members कि आपका जो भी सोच है, जो भी आपका मंतव्य है, that is very matters to us. So thank you so much and we welcome our board member, Mr. Nsmh, and I request you please come here. And then I would like to request Dr. Pankaj Kumar ji to please give yours. A very good morning to all of you. It's really heartwarming to see all of you on a chilly Sunday morning. It's a full house. I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year advance. I would like to thank you, Dr. Sai sir, and Dr. Lok and Guru team to invite me and give this opportunity to be here among all us together. Before going further, I would like to share one thing. Dr. Sai ko shayad jaan na ho. It's really honor to sit along with him. It's really I remember it today. And when I used to do my PG in my KGMU, Lucknow, sir को शायद ध्यान होगा नहीं, 77 का कुछ अटेंड करते हैं। Sir was my chief guest in the foundation department. It's been like 2008, 2009 time, So no sorry, 2005, 2006, 2005 के आसपास। तो उस टाइम हम सुना करते थे कि इंडिया में कुछ बंदा साइकियाट्रिस्ट है, 4-5 नाम फिर में सरकार नाम के अंदर था, उनसे भी अपने बात करते थे। और वो था ड्रीम टू मीट सर, और मेरा टैलेंट भी था कि सर की जो कहानी ली थी हमने मतलब तरह सर का नाम थे, बट सर क्लिनिकल डिपार्टमेंट ही वाज सो इनवाइटिंग, सो नाइस टू टॉक टू। ऐसे यार लोग बातें कुछ करते हैं, सर है कुछ और, ये कहानी समझ में नहीं आई। और फॉर अ पीजी लाइक मी और सेकंड ईयर इट वाज लाइक वेरी फर्स्ट ईयर इट वाज लाइक गेट ऑन टू टॉक टू सर, एंड फ्रॉम देयर सर इज मेंटर टू मी आल्सो लाइक टॉक टू many of you. He's been guiding force behind me and all the business and the mental fraternity and fraternity. And he's been there. Thank you sir for everything. Thank you. He's been at force. Thank you. And like Anuji was saying, it's a big task. 25 years. Wow. Let's celebrate, It's like a big chair. It's not a small thing. You do constantly do 25 years same thing and for good of the society and without your own self कि हमें कुछ से फायदा होने वाला है, कुछ मिलेगा, निस्वार्थ सेवा तो कितने लोग कर पाते हैं? 25 साल तक बहुत बड़ी बात है। Round of applause to I would say. And good morning to them also from Notice Valley and all that dignitaries on the dice. Thank you. So why we need this conference? Why it's a good idea? Disability. So as per WHO, जो आज का जो टॉपिक है, relevance of brain science for disability advocacy and inclusion. Why do we need this? Why do we need advocacy for the disability? हमें inclusion क्यों करना है? कोई क्या जोड़ता है? हम हमारे तो कोई नहीं करता। Why do we need for them? It's a big question. Big. Because as per WHO, disability can be inherent in person's body structure, function, or mental function. Number one. It can be activity limitation also, such as difficulty in seeing, hearing, etc. Or it can be difficulty in participation, restrictions in normal daily activities such as working, individual recreation activities, etc. These are all
disabilities which you classify in 4 major categories. So हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो अपने लिए नहीं कर पाते, जो हम बड़े नॉर्मल इंसान से आज हमने गाड़ी पार्क करी, स्टेज तक आए, हमने सोचा भी नहीं होगा कि हम सीढ़ी चढ़े लिफ्ट पे बैठे और आगे चले गए. Example, a person with disability doing this task is a major thing, you know. So it's not easy for him to get on the stairs. For example, if person is in wheelchair bound, so उसको सीढ़ी से लाना difficult task. We have to have a time for that. Lift is very great, but for example, let's say cheapness होता है हमारे बीच में, वो टाइम खाना होता है. So again, we can see what stairs we have to go through, and this is all small things जो हमें लगता है कि हमें भाई बच्चों मिल रही है, हम तो सोचते भी नहीं है, पर वो उनके लिए, उन व्यक्तियों के लिए वो रोजमर्रा की लाइफ है, छोटी छोटी चीजें करना, छोटी छोटी चीजें कराना. तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो इस टॉपिक सर ने रखा है, जो उसको हमें इंसर्टाइज करेगी और इस तरह हमें जागरूक करेगी, उस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं. तो स्मॉल थिंग्स, तो ये हम लोगों का कर्तव्य है कि जो कार्य हम कर सकते हैं बड़े आराम से, उनको भी ऐसा समाज में जहां पे वो इस कार्य को ठीक से कर सके. Not just we are speaking, we are inclusive, we are empathetic, we feel like no, that's one thing, but we are talking about that. But talking is one thing and doing is another thing. So you should talk great. This seminar is like to sensitize all of you, but it is like a seminar जो बनाई है, जिससे हमें जो तो जरूरी है कि वो आपके द्वारा सबके द्वारा होगा. So ultimately you should take this message and in the society और एक ऐसा समाज बनाए जहाँ पर हम बातें ना करें इंक्लूजन के लिए, उनके लिए दिल से महसूस करें, कार्य करें और उनके लिए ऐसा समाज दे जहाँ पे वो सारे कार्य हम कर सकते हैं. एडवोकेसी कैसे कर सकते हैं आप? एडवोकेसी कॉन्फिडेंस बाय स्पीकिंग, जो लोग आज सब कर रहे हैं, बात करके इसके बारे में, और राइटिंग, कोई ब्लॉग लिख रहा है, न्यूज़पेपर हो, एनी इंटरनेट, और टॉकिंग, और वी आर एक्टिविस्ट इन डिफरेंट वेज वी कैन एडवोकेट टू दी और आवर फ्रेंड्स. वो भी हम लोगों के हिस्सा है समाज का, बाहर से नहीं आया, कोई मार्ग से नहीं आया, हम सबके बीच में है और हमारी भी हमारी जिम्मेदारी है उनको एक समाज प्रदान करना जहां पे वो लोग इस बिना किसी झिझक के ऐसा रह सके और आगे बढ़ सके. तो दिस इज ऑल आवर ड्यूटी फॉर दैट. एंड एज यू नो, ब्रेन इज द एपिसेंटर फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस which hold key for every individual. So in advancement of neurosciences, AI coming into picture. AI is a game changer. With AI and brain science, and a lot of things have done for disability, for their inclusion. With AI, lot of things are coming into picture. So उनको वो प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं और आगे बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो उनको आगे दे पाएंगे और उनको बेहतर जीवन बनाने में मददगार होगा. So without taking much lot of your time, because I know you are eager to be a lot of different speakers here, I would end my thing. In essence, the relevance of brain science of disability and abilities in action ability to shape the society that values individual regardless of their neurological differences. It challenges us to move beyond real tolerance to genuine understanding, acceptance, and celebration of diversity. As we continue to uncover the mysteries of the brain, let us remember that our journey towards true inclusion begins with profound appreciation for the complexity and uniqueness of individuals' mind. That is uniqueness of the mind. We need to understand every individual's unique themselves. We can't compare each one like सब बराबर है. Uniqueness of that's very important है. And वो एक एंड में तो मुझे किसी बहुत महान व्यक्ति की कहावत याद है. मुझे कभी कहा था मुझे कुछ छुएगा तो मुझे बोलता हूँ. Enjoy ability stability. Enjoy live last. So everyone is able to और वो हर व्यक्ति को डॉक्टर साहब अपनी कहावत का बात करते हुए नहीं मिलता. Thank you. Thank you, Dr. Pankaj. आपने बहुत ही अच्छे से डिसेबिलिटी को समझाया एंड इट्स ऑलवेज प्लेजर. मैं देखता हूँ कि हम लोग रिहाब वाले जब मेडिकल फ्रेटर्निटी से मिलते हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग भी हमारे सेक्टर को बड़े अच्छे से, खूब बड़े अच्छे से एम्पैथेटिकली समझते हैं. दैट इज द बिगेस्ट थिंग एंड व्हिच खास करके अगर हम देखें तो पहले लोग सोचते थे कि साइकियाट्रिस्ट के पास हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले को कैसे ले जाएं, क्यों ले जाएं, तो कोई पागल है क्या, कोई प्रॉब्लम है. लेकिन अब तो बहुत ही सिनेरियो बदला है, बहुत सारा चीज बदला है. दैट इज वेरी ट्रू. And now I would like to request Dr. Ruchi Seth ma'am to please give your blessings and yeah. Two quick things over that. One is what Pankaj said. Allow me to rephrase that. और इसका याद रखिएगा सर.
we are all temporarily able. You know? Madam Ruchi said is not only a great educationist and a thinker and a lot of other things that I have understood, but she's also PhD in that I'm sure she'll refer to for one or the other reason, sensory integration and a whole lot of stuff. So please listen to her very carefully. थैंक यू डॉक्टर देसाई। जब आपने मुझे कहा था कि आप चीफ गेस्ट बन के आए यहाँ, तो मैं थोड़ा घबरा गई थी। नो डाउट मैंने अपनी पीएचडी करी है आईआईटी दिल्ली से, और डॉक्टर पंकज, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे वाइवा के लिए डॉक्टर देसाई ने आना था और मेरी जान निकली हुई थी। मैंने कहा इतने बड़े प्रोफेसर, निम्बुलेंस, इमलास, और मैं तो सिर्फ एडोलेसेंस के बारे में थोड़ा सा एक हिस्से में मैंने थोड़ी इन डेप्थ पढ़ा है, तो कैसे झेलूंगी, मैं पास होंगी कि नहीं। तो पता नहीं किस्मत ने साथ दिया कि डॉक्टर देसाई कहीं किसी बैठे, लेकिन इच्छा बहुत ही इनसे मिलने के लिए। तो मैं डॉक्टर जितेंद्र नागपाल टुकमा, but I was very curious because इनका नाम इतना बड़ा मैंने सुना था कि मेरी बड़ी इच्छा थी। और अभी हाल ही में हमारे स्कूल में हमने 16 तारीख को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का एक कार्यक्रम किया था, और हमें मौका मिला डॉक्टर देसाई को मिलने के लिए। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मिस्टर आलोक ने कहा था कि he is a very energetic and committed person, I'd also like to add to that, he's a very humble person. So beautifully and without making us feel that he is there and not on the ground, he integrated into our school system, connected with the special educators, our vice principal, the children, the teachers and everybody. And we had a wonderful program over there. बच्चों के साथ मिले, उस टाइम हमने बहुत सारे स्कूल के बच्चे बुलाए थे। तो कुछ बातें मुझे याद आ रही हैं कि एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि बोथ डॉक्टर देसाई आए हैं अभी लेट ब्लूमर्स। आपने 40 साल में गाड़ी चलानी सिखाई, और मैंने अपना पीएचडी 40 साल होने से पहले बस अभी खत्म ही किया था। तो कुछ कॉमनैलिटीज हैं हमारे बीच में। That's on a lighter note, but I want to congratulate the lady whose son has brought out this book, हनुमान चालीसा पे जो है। और मैं उनसे बहुत बिल्कुल सहमत हूँ कि परिवार का पूरा योगदान बहुत जरूरी है। परिवार ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते अपने बच्चे की डिसेबिलिटी को, और कभी-कभी हमें 2-3 साल लग जाते हैं कहते। I want to go back to my early years when I first became a principal in 1990. I was raising the school. I was a founder, head of the school. और एक क्लास 4 के बच्चे की रिपोर्ट कार्ड मेरे पास आई, और टीचर कहती मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। रिपोर्ट कार्ड देखी तो सारे सब्जेक्ट्स में 0 और मैथ्स में 100। I didn't know what to do. I was 35 years old and 2 years of experience as a principal. I didn't know what to do. There was no such thing as addressing the needs of special children or special needs of children. And incidentally on that point I'd say, आपने जो कहा था हमारे स्कूल में कि there are special children and there are children who feel the need to be special. So there are all kinds of children, and for us they're all stars. They all shine brightly in different ways. We just have to discover what that way is. And I go back to that report card, and I could not fathom what I could do. So the teacher herself volunteered. Ma'am, just leave this to me. I'll try to do.
थोड़ा सा इंग्लिश में मार्क्स बढ़े, थोड़ा सोशल साइंस में मार्क्स बढ़े मेहनत करके, लेकिन फिर भी वो जस्ट अबाउट पास करने लगा इन दो सब्जेक्ट्स में, हिंदी में 0 था और मैथ्स में 100 on 100. So how does a child achieve this? Achieve this and neglect the rest of it? Obviously, the one thought that came to my mind is this child is wired differently. So when I say wired, it means his brain, his synapses, his development of different parts of the brain is developed differently. So that was a very important thing. Now I was talking about the role of parents. Sometimes we lose some very precious time. हमारे स्कूल में ही एक बच्चे को ASD था और पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में इवेंचुअली पेरेंट ने कहा कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, और आप बताओ हमें क्या करना है. I had another parent who came in class 9 because he was borderline ASD. He was high functioning, borderline ASD. He was doing very well in his academics, but socially he was not able to maintain social relationships or interact with others. And the father said, that's all right, he's just a loner. It's okay to be a loner, but if you're unable to face somebody and look somebody in the eye, and you're always looking down like that, that can become a problem in future life. So those are the issues that bothered us. And in class 9 when the child reached there, and then he realized that he had somehow, और काफी देर हमें blame करते रहे कि you're labeling my child and you're doing this and that. But we had reasons, strong reasons to believe that that was not the case, because we have experienced special educators, we have occupational therapists, we have speech therapists, we have a vice principal who is a psychologist. As a principal, I am a psychologist also. So we were quite confident, and I think it's parents as well as teachers in many schools, and we faced this in our school also in the beginning. It's very difficult for a teacher to manage 30-35 children in a class, particularly if you have a hyperactive child, because they not only hurt themselves, they distract the class and they hurt other children. So other parents come and complain. So they have to be taught and sensitized. ये जो advocacy की बात कर रहे हैं, तो हमने बहुत advocacy करी, बहुत training करी teachers की, बहुत hand holding करी, जहाँ पे हमें लगता था कि कुछ भी क्लासरूम के अंदर मेल्टडाउन होने वाला है, फट से वहाँ पे हमारे स्पेशल एजुकेटर पहुँच जाती थी और हेल्प करती थी. पूरे स्कूल में हमारे स्पेशल एजुकेटर्स फैले हुए हैं ताकि कहीं पे भी बिना टाइम लूज किए वो उस जगह पे पहुँच जाए. अफसोस की बात ये है कि how many of you are from the metro cities? Delhi, Gurgaon, Noida. How many of you are from there? Mostly. If you go a little beyond the metro cities, there is no understanding of what is the need for a psychologist, a special educator. मैंने CBSE के बहुत सारे inspections किए हैं. एक बार मैंने एक जब इंस्पेक्शन की तो उसमें मैंडेटेड है कि एक साइकोलॉजिस्ट जरूर होना चाहिए. अब तो मैंडेटेड ये भी है कि स्पेशल एजुकेटर्स होने चाहिए. तो मैंने पूछा कि आपके काउंसलर कहाँ है, मैं मिलना चाहूँगी. So बात करी तो मैंने कहा, it was very evident that she was not a counselor. So I said, आप कहाँ बैठते हैं, काउंसलिंग कहाँ करते हैं? कहते हैं यही स्टाफ रूम में बैठते हैं. बताइए, ऐसे कभी हो सकता है? Counseling is a very confidential matter. So beyond the metros, there is very little awareness and understanding. Special educator की बात तो छोड़ ही दीजिए. वो टीचर से डेवलप करवा लेते हैं काउंसलिंग एंड टीचिंग. And she was an English teacher.
teacher of English, not even teacher of psychology. So बहुत बहुत important है कि awareness हो और जो प्यार से I think you all may have seen that movie, A Beautiful Mind. Have you seen that? What is the essence of that movie, can I ask you? What thought were you left with? Anybody? Share your thought, it may be right or wrong, we can discuss it. What was the essence of that movie? If you have insight, you can live with your difficulties also. If you have insight, absolutely. And I think if you have love from your family, because it was the wife who supported him. And I have a friend whose daughter is a schizophrenic, but she's living an as good a life as him. She's very well spoken. She has a good days and bad days. She's doing a wonderful bakery business, but she shies away from talking about it. So her mother does the marketing for her. So I think, and I have attended many, have you heard of Tamanna? Yes. So I think you all have heard of Tamanna. Every year I attend a fashion show by Dr. Jonah in the Hyatt. And the best of the fashion world people come, the best designers come there because Mr. Sunil Sethi, who is the head of the FCCI, he is her cousin and he arranges this whole thing. And with those designers work children with special needs. So you have to give dignity to all these children. And as was rightly said, it's not the time for doing it with just compassion. It is a right for them. I have parents who tell me, हम ये बच्चे को इधर दाखिल कर दिया हमने, अब ये आपकी जिम्मेदारी है करना. I could not find a person who could help with a visually impaired child. तो ढूंढते ढूंढते काफी टाइम लग गया. And I must tell you, as far as rights is concerned, I got a letter from, I think it's under the Ministry of Social Justice. So वहाँ से मुझे लेटर आया कि आप इस बच्चे के लिए आप क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे स्पेशल एजुकेटर. So it is our responsibility, and it's a wonderful responsibility. We should embrace it because we want every child to shine. And I can see even in the hyperactive, the ASD, the visually impaired, the hearing impaired, all of them have a certain skill which they can blossom. Fortunately, in today's world, careers are changing. Entertainment has become a great career. So if you're visually impaired and you can sing, दिवाकर के बारे में सुना आपने? Divagar. He is visually impaired, but he sings beautifully. And he has been singing on the stage. He's been singing, he's gone all the way up to Bollywood. So every person has their own ability, and that is the potential that we want to hold. Now, we're talking about brain-based learning. I want to share a slide with you. I've often thought, why is physiology not taught a little more in grade classes? At least the physiology of the brain and its functioning. Now, if you look at this, is just a very simple diagram of the brain, and look at the functions it's doing. Everything relating to learning and behavior. So, if we don't understand the brain, how do we understand the needs of the child? So you all must learn about it. There's a wonderful book called, it's called Brain-Based Learning. So read that book, it's available on Amazon. The other book I would like to recommend, if any one of you want to read it, is Dibs, D-I-B-S, In Search of Self. Dibs is the name of the boy. In Search of Self. A child who was labeled to be severely autistic
but he was a brilliant child. He was just autistic because he did not get the time, attention, and love of his parents. They were very busy, very successful parents. Extremely neglected child, and how he was labeled to be autistic till he was taken into therapy, and then he lost them. All his skills lost them. So he was a very normal child. So we have to really understand the reason underlying the problem also. It's not necessary, it could be a brain dysfunctioning or a neurological problem. So these two books. And the third, of course, is my favorite book called Smart Moves. Learning is not all in the head. While we're talking about the brain, it's the whole body learning. It talks about how movement helps the brain, because what you can't see here is the right and the left brain, and connecting to these two is a small tissue, portion of tissue called the, anybody knows? Corpus callosum. Very good. So that tissue gets aggravated or jogged or active, that's the right word, when you move. And so both sides of the brain get activated. And that's what we want. Whole brain learning, all parts of the brain should be activated. So what we do with our children is we do a little brain gym exercise. Everybody from pre-nursery, nursery, KG, class 1 to class 8, we make them do these little exercises, which you can do standing at your place in the classroom. And it gets them ready for learning. And then of course the synapses, they need to have a moist transmitting system so that the synaptic impulses get passed on quickly. So we ask them to keep a bottle of water on their table and sip it. So these are some of the practices amongst many that we do. But it's been a great pleasure sharing some of these things and my thoughts with you. I think there's a lot we can do. I've traveled almost the whole world and seen special schools all over. We are almost there. If our managements allow us, and the teachers have the will, and the parents have the love and commitment to their child. Thank you very much for inviting me. I'm very honored. Thank you so much, रुचि मैम. एंड मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ आपके विचार नहीं थे, इस विचार में बहुत सारे गूढ़ चीज छिपे हुए थे, गूढ़ रहस्य छिपे हुए थे, और आपने पूरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को हमारे सामने रखा. So that's again we really listening, and we have our board member here, Mr. Anand Maheshwari sir. And he is from the corporate sector, but he has a very great connection with the disability and manovikas. So I would like to request कि हम आपके दो शब्द सुने, और then we will go for the vote of thanks with Sangeeta. Thank you so much, Anand bhai. सबसे पहले तो आज यहाँ दिल्ली से पहुँचने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ. हमारी वीआईपी कल्चर का एक और ये एस्पेक्ट रहा कि अनायास कोई 20-25 मिनट के लिए अभी तक नहीं पता क्यों, पर जहाँ मुस्लिम ट्रैफिक होता है वहाँ पे रोक लगा दी गई थी. बाद में पुलिस को देख के ऐसा लगा कि शायद मैं वीआईपी काउंटर हो जा रहा हूँ. तो बहरहाल मैं यहाँ आ पाया, इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ. तो आप सबके बीच में आता हूँ तो हमेशा इस भावना के साथ आता हूँ कि ये जो लोग जिसमें हम सब है, ये संसार है जिसमें सब तरह के अनुभव होते हैं, तो जो जिस सेक्टर के लिए हम सब लोग यहाँ मनोविकास के मैदान में इकट्ठे होते हैं, वो एक बहुत बड़ी सामाजिक जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक कदम है, एक मूवमेंट है, और उसके लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद. आज के सब्जेक्ट के ऊपर मेरी कोई पकड़ नहीं है, लेकिन कुछ सुना है, देखा है, मनोविकास में आते जाते कुछ थोड़ा बहुत समझा है, पहले ही भाष में आने जाने से कुछ थोड़ी बहुत बातें समझी हैं. तो मैं समझता हूँ अपने खुद के 40 साल के अनुभव के आधार पे कि ये कन्वर्जेंस का युग है,
और आज उस कन्वर्जेंस के कई आयाम, कई एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि आज ही हम देखें तो एक जो स्पेशल एजुकेटर्स का जो करियर प्लान लेके आप लोग यहाँ सब आते हैं, और आज जो हम IMA भवन में मेडिकल फैकल्टी के साथ एक कोर साइंटिफिक सब्जेक्ट के लिए ये 2.5 दिन 3 दिन का एक कार्यक्रम रखा गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कन्वर्जेंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि रुचि मैम ने बताया कि ये केयर, लव, अफेक्शन के साथ जो भी अगर अदर इंटरवेंशंस की जरूरत होती है उसकी कन्वर्जेंस से ही अच्छा आउटकम होगा। एक और बात डॉक्टर पंकज कुमार ने पिकअप की थी, जो मैं अपने कार्य क्षेत्र में रोज देखता हूं, और वो संबंधित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप में से कितने लोग चैट जीपीटी यूज करना शुरू कर दिए? तो सभी कुछ लोग हैं, जिसका हाथ ज्यादा खड़े होने की उम्मीद थी मुझे। लेकिन ये जो एकदम से पिछले 5 साल से तो काफी बातचीत चल रही थी, लेकिन पिछले 1 साल में, आज करीब करीब 1 साल पूरा हुआ है, पिछले नवंबर में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, तो पिछले 1 साल में ये एवरीडे टॉपिक बन गए, एवरीडे हमारे बिहेवियर का पार्ट बनने जा रहा है। लेकिन इसके कई ऐसे चीजें हैं जिसके ऊपर मैं आपको कन्वर्जेंस की पॉइंट पे बोल रहा हूं कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कन्वर्ज नहीं होगी तो हम अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं, और इसके काफी ऐसे परिणाम, दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जिसके लिए हमें आगाह रहने की बहुत जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि लगभग सभी लोग, इंक्लूडिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा आगे लेके प्रमोट करके आए हैं, इंक्लूडिंग वो सब लोगों ने इस चीज को हाईलाइट किया हुआ है कि इसका यूजेस हैज टू बी वेरी केयरफुली एंड वेरी डिफरेंटली इनेबल्ड, और वो सब तभी हो सकता है जब हम ह्यूमन इन द लूप रखें। तो हम आज भी अपने बिजनेस में जो भी कोई सॉल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लाते हैं तो ह्यूमन इन द लूप को नहीं अनदेखा कर सकते। तो ये 2 कन्वर्जेंस के पॉइंट्स थे जो मैं सोचा कि आप जब अगले 2-2.5 दिन 3 दिन यहाँ गुजार रहे हैं तो इसको इस एंगल से आत्मसात करने की कोशिश करें, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। एक बार पुनः आप सब लोग जिन्होंने बाय चॉइस स्पेशल एजुकेशन को अपना कैरियर पाथ चुना है, उसके लिए मैं आप सबको एक बार फिर साधुवाद देता हूँ। आई सैल्यूट यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच थैंक यू। Thank you so much, sir. And okay, please, Sangeeta ma'am, please give. So I request for a small gift from one of the family, please. Yes. Sorry, I asked for a photo. Right on there. Right. Love arts product. Love is the key word. Sir, I'll request you to प्लीज तालियां जोर से बजनी चाहिए हमारे देश की। Now I got the opportunity to see the vote of thanks. सबसे पहले मैं डॉक्टर रुचि मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैम ने अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट समय, और स्पेशली टुडे संडे, श्योर मैम ने अपना समय निकाला
और बहुत बड़ी बात आज मैम से हमें ये सुनने को मिली, जो मैम ने कैसे लाइव एग्जांपल देके हमें बताया, और मैम आल्सो सजेस्ट सम बुक्स फॉर अस. वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम. एंड वन मोर थिंग मैम, एक डिग्निटी और सेल्फ स्टीम, दो टू थिंग्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर हम अपने स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ स्टीम और डिग्निटी की बात करेंगे तो हम उनको बहुत आगे सक्सेस के लिए लेके जा सकते हैं. सेकेंडली आई थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर पंकज सर. सर ने बताया व्हाई एडवोकेसी इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी. उनके माध्यम से, एडवोकेसी के माध्यम से वी रीच हाई स्कूल लाइक अ पॉलिसी मेकिंग. अगर पॉलिसी मेकिंग की बात होती है तो हमें जरूर अपने पीपल विद डिसेबिलिटी को उसमें रखना चाहिए. किसी भी तरह की बात में हम उनको आगे लेके जा सकते हैं. आई ऑल्सो थैंक डॉक्टर देसाई सर. सर के गाइडेंस में हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, और इस 25 साल की जर्नी भी सर के माध्यम से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं. एंड आई ऑल्सो थैंक्स आनंद महेश्वरी सर, गुप्ता सर एंड आलोक सर, जिनके हाँ ओ मनोज, वो वेलकम मनोज वंस अगेन. एंड मनोज को भी बहुत बहुत धन्यवाद. He was a student, then he became the in charge of our whole transportation, and he is good in making the money. So Share marketing. Share marketing. He is making a lot of money, and he is the board member. और एक चीज और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि मैंने सबसे पहले लाइफ में कंप्यूटर सीखना मनोज से शुरू किया. तो इट्स अ ग्रेट फॉरवर्ड. मनोज ने मुझे सबसे पहले कैसे ऑन ऑफ करना और सेकेंडली कैसे स्टेप लेना मनोज ने मुझे सिखाया. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू. नाउ रिक्वेस्ट यू प्लीज फॉर वी विल जस्ट स्टार्ट द नेशनल एंथम. तो प्लीज जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 Tea is in first floor. Kindly request you please join us on ground floor. Yes.